अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा खान और आप देख रहे हैं इस वक्त सिस्टर्स कॉर्नर ऑन IQRA TV। सिस्टर्स कॉर्नर में हम हर हफ्ते एक ख़ास टॉपिक और एक ख़ास मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हमेशा एक ऐसा मेहमान और एक ऐसा टॉपिक लेके आएँ जिससे कि आप फ़ायदा उठा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल हो। इसी तरह से आज के मेहमान में भी, आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं और मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं समीना खान और समीना खान जो हैं वो CEO हैं BCDE में। Assalamu alaikum Samina, and thank you so much for coming in into today's program. Thank you, Uzma. Thank you for having me today. And बढ़ते हैं फिर शबाना खान की तरफ और शबाना खान जो हैं वो एडवाइजरी के तौर पे काम कर रही हैं in the same organization और obviously a lot of experience as well. So thank you so much for coming in today's program as well. Thank you very much, Uzma, for inviting us. So बढ़ते हैं हम मज़ीद तफसील की तरफ जानना चाहेंगे what the services are at the moment and what they are doing in the community right now, because they are playing a vital and active role in the community in these days. And we would like to know about like what are their services for the women, especially Asian women. So first of all, I will go ahead with Samina Khan. Samina Khan, please tell us what are we going to discuss in today's program. Obviously, I know and I understand that you are providing a lot of services in the community, especially for women's and empowering women's in different sort of like things. So in today's program, I think we will discuss more about women's empowerment, and then we will discuss about digital health and what sort of things you are helping with the women sitting at home or working. So please go ahead. Thank you, Uzma. So as you rightly said, today we're going to discuss things around empowerment and how we feel we can help empower the women from different backgrounds, from all walks of life that we deal with throughout the diverse communities. And the things that we're very focused on at the moment is education and skill sets. We're very focused on wellness and digital health, and because myself and Shabana are very keen on digital platforms and come from an IT background, we have used our programs with the initiatives of using technology and digital platforms, and we feel that is a very big milestone achievement for women to grasp, because it allows them to upskill much faster. It allows them to reach a wider sense of communication and a wider ability. And I think in terms of the safeguarding of women, the sort of women's rights and utilizing your talents to the best that you can. And when we say utilizing your talents to the best as you can, for that we offer sort of like more soft skills kind of coaching, counseling, NLP learning, which is neuro-linguistic programming, on how we can get you more empowered, more confident to speak, more able to demonstrate your skill sets on paper, visually, physically. One of the most things I'm passionate about, or the two things I should say, with our programs is the digital platform we offer, which is using online platforms to sell or trade your services and also products, because we've got a lot of ladies in our communities who are very skilled, but they don't know how to take advantage of certain things. And the second thing is the education around that as well, attaining the relevant skill sets. And on the digital health and well-being, utilizing the digital platforms to monitor and be on top of your health in a health and wellness perspective or mindfulness perspective, and also accessing the resources we have in terms of skill sets for coaching, mental health, well-being, which are very taboo kind of subjects in our communities, but things that do need embracing. Because we have currently a lot of ladies who are not with their husbands anymore. We've seen conflicts as well within family situations, with partners, with extended families.
So we do offer a point where we can signpost Yeah. people to the relevant charities and support units Yeah. where we cannot necessarily facilitate everything that they are requiring. Yeah. Shabana will talk you through on the education side and how we're using the upskilling and the education platforms to really take things to the next level. Yeah, I think I will go back to you after discussing with Shabana what sort of like educational services you are providing at the moment towards women in the community. So obviously a lot of women are sitting at home and maybe they are educated, maybe they are not, maybe they have skills or they don't know how to utilize it or how to, where to go, where to get the right help. So what sort of help you are giving to the women who are sitting at home, and how you can be more approachable or accessible towards those ladies, how you can, Sure. yeah. Uzma, would that be okay if I can use Urdu as a language because Yes, you yes, have yes. mixed, mixed audience? I would appreciate it. Yeah, okay. Basically, जो BCDE का the model of working जो ख़वातीन को हम educate, empower through education and ability to make money. Yeah. जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम जो ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के काम कर सकती हैं, तो जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इस वक्त जो ई कॉमर्स है, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर वुमेन वेयर दे कैन शेयर देयर स्किल, देयर हैंडीक्राफ्ट, देयर वर्क. अब हमारे यहाँ जो बैरियर है, लाइक मैं पिछले तकरीबन 20 साल से कम्युनिटी में काम कर रही हूँ, बैरियर ये है कि थोड़ी सी हैंड हेल्ड सर्विस चाहिए हमारी ख़वातीन को कि उनके पास स्किल तो है, उन्हें ये नहीं पता कि अपने उन स्किल को उन्होंने यूटिलाइज़ करके बेचने कहाँ है. सही है. उसी तरह तालीम के लाइक BA भी किया हुआ है, डिग्री भी की हुई है, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीकिंग कन्वर्सेशन, इस तरह की सपोर्ट चाहिए जिसमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जिसमें उनको बिजनेस कम्युनिकेशन एस्पेक्ट से. तो हम क्या करते हैं होलिस्टिकली, जब हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उनको हम हाइब्रिड तरीके से अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. यानी ख़वातीन को कुछ असेसमेंट्स के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी सो एट द कंफर्ट ऑफ देयर हाउस दे कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम्स. Basically, some will be funded, like most will be funded by the government, but there will be some which was sponsored by organization who are working with us. So it will be free for the audience. हमारे पास जो लोग आएंगे उन्हें कोई अब उसके लिए पैसे नहीं देने हैं, लेकिन हर कोर्स जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्टिफाइड, यानी जब एट द एंड ऑफ, जब इंग्लिश उर्दू मिक्स होता रहता है, जब वो कोर्स कंप्लीट करें तो उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे उनको दे कैन गो फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट. जैसे हम अभी एक फूड सेफ्टी पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि घर से कुकिंग कर रही हैं, यू नो, उनको हेल्थ हाइजीन कंटामिनेशन के लिए हम वो प्रोग्राम फ्री ऑफर करें ताकि वो जो अपना काम कर रही हैं छोटे भी स्केल पे, वो कॉन्फिडेंस से उनके कस्टमर उनसे बाय कर सकते हैं. तो वो कहते हैं कि हाँ इनको अवेयरनेस है कि ये किस तरह से करना चाहते हैं. तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जहाँ गैप्स हैं, हम अब एक एजुकेटेड इन्वायरमेंट से आए हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम उस इन्वायरमेंट का जो बेस्ट आउटपुट है अपनी ख़वातीन को दे सकें, लेकिन बोदरिंग देम लेस एंड मेकिंग इट आउटकम ड्रिवन, कि एट द एंड द बेनिफिट. ये शबाना बहुत अच्छा भी है कि आप मतलब उनकी स्किल्स को एक प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई कुकिंग करना जानता है एंड दे डोंट हैव द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस बेसिकली, तो वो एक प्रोफेशनल वे में दे प्रेजेंट देमसेल्फ. बिल्कुल इसी तरह जैसे एक खातून है, वो अगर अपना बिजनेस करना चाहती हैं, ठीक है, तो अगर वो बात करेंगी तो हम उनको कंपनी फॉर्मेशन से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके, तो उनको प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल पीपल हम दिलाएंगे ताकि उनको जो एडवाइस मिल रही है वो कोई एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है, वो है जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर हो, जो कानून के मुताबिक हो. आप समझ रहे हैं, ताकि उनको जो, और ये सब एडवाइस उनके लिए फ्री है. तो इसलिए हम ये बैरियर्स रिमूव करना चाहते हैं. जैसे अभी समीना ने बात की, तो ये इस सारे में जो हम ख़वातीन को, एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर वुमेन टू बी ऑनेस्ट, बट क्योंकि हम ख़वातीन हैं, हम इस टॉपिक पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे आके देखें तो देयर आर 8 एरियाज वेयर वी आर वर्किंग. ठीक है, लेकिन उसमें ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड
लोग हैं मोस्टली वो BME कम्युनिटी की ख़वातीन है, ठीक है। तो उन ख़वातीन को एंड दे आर लाइक मैंने लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में भी काम किया है, दे आर हार्ड टू रीच पीपल बेसिकली। कोई भी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए कौंसल अगर कोई चीज़ ऑफर कर रही है, हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या अवेलेबल है। तो हम ये वो जो गैप है ना, ग्रे एरिया, नॉट नोइंग व्हाट इज़ देयर एंड प्रोवाइडिंग देम व्हाट दे कैन, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों साइड पे लाइट शेड कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ के ग्रेटर पर्सपेक्टिव में, ताकि जो लोगों को पता चले कि ये मुझे जो सूट करता है ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल होगी। एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 30-35 पीपल जो कि हम मिलके कर रहे हैं, यानी ये इंडिविजुअल्स नहीं हैं। तो इस वजह से आपको एक एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें हम लोगों को लाइक बॉटम लाइन ये है कि हम काम करना चाहते हैं, और समीना का इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी बात आपने की शबाना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म IQRA TV एज़ वेल, कि हम जिसके थ्रू थोड़े लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं। जो ख़वातीन इस वक्त प्रोग्राम हमारी सिस्टर्स देख रही हैं, उनको भी आप जो कुछ बता रही हैं उनसे मालूमात उनको मिल सकती हो, वो आप तक रसाई हासिल कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा आप और क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं कि इन ख़वातीन तक पहुंचने के लिए, और ताकि वो आप तक पहुंच सकें? मिसाल के तौर पर आप GP के साथ काम करती हैं या मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आपके अंदर काम करती हैं, कैसे आप एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं? उस्मा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और समीना और मैं जब ये डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज माई रोल इज़ एडवाइजरी एट दैट एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड, तो हम लोग लाइक लिटरली वर्किंग साइड इन बाय साइड, लेकिन दैट्स हर मेन एरिया ऑफ वर्क। तो मैं एक एडवाइजरी एस्पेक्ट से जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा की फोकस ये था कि हम एक नई कोई चैरिटी नहीं बनाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उन्हीं को सपोर्ट करें। जैसे कहते हैं ना कि हम दोबारा से वी डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करते हैं कि जैसे मॉस्क्स हैं हमारे पास, गुरुद्वारास हैं, रिलीजियस सेंटर्स हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पे लोग आते हैं फॉर देयर रिलीजियस पर्पसेस, लेकिन क्योंकि हम वी सिट होलिस्टिकली ऑन अबव दैट होल स्पेक्ट्रम, तो हम यहाँ से जैसे अब जिस तरह इदारा है, यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया का कोई इदारा है या सुन्नी इदारा है या शिया इदारा है, तो वो जब अपने ख़वातीन का वो इकट्ठा करते हैं या वो इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, तो दैट इज़ वेयर दे कॉल अस टू लेट अस देम नो, यानी हम अपनी उनको जाके, जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वी गो इनटू दोज गैदरिंग्स एंड मेक देम aware of what we can offer. तो इससे ये होता है कि there is a direct access to the audience, और साथ के साथ हम community organizations को भी help करते हैं। लाइक समीना ने अभी एक मस्जिद के लिए बिड राइटिंग भी की है, सही है। जैसे एक हम उनको डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक वी डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर दैम। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक छोटी चैरिटी को चाहिए होती हैं, वो भी BCDE प्रोवाइड करता है। बाकी समीना कैन एक्सप्लेन। As Shabana rightly said, so we've built relationship across the multiple community units. We sit in a holistic perspective, so we're not affiliated to any religious belief or practice. Our main point is to go in as a sort of neutral point, as an advisory point, and to work across. And because we've established relationships in all the communities, and you can check on our website, one of the things we're very keen on is the interfaith harmony, where we sit across multiple faiths, Catholic, all different kinds of faiths, regardless. And because of the alliances we've created at a higher level, it allows us to work at a ground level. And that is established trust that we've gained within the community, and that's how we are talking and pulling people towards us to utilize our services, to engage with us, to trust us. Another key thing also on the wellness side has also been our own giving and some of our softer skills, such as mindfulness, counselling services that have allowed us to build bridges back into the communities as well. So there's been a lot of work that we have to do. Shabana, a very good discussion is going on, and I would like to go more in depth, like when you talk about like different faiths. Obviously, you are helping everybody up. You know, it doesn't matter if somebody is a Muslim, you know, Sunni, Shia, Hindu, Sikh, Christian, or whoever. You know, whoever is coming to you towards help, you are just trying to help.
How do you approach different religions? Are you working as, I have discussed with Shabana as well. So do you go in different religious places as well, like, and get that platform to present yourself, or contacting, reaching out different charities, working along with you? And then how many people you have so far you have helped, or roughly? Oh, we've helped in regions of hundreds in terms of actual outcome-driven results. In terms of when you refer to how we do attend certain gatherings on different religious scenarios to engage with the communities. We have done sort of awareness campaigning, as we are doing here today on IQRA TV, within the communities as well. And a lot of this is our relationships that we've built up over years. And now. if I just say, one of our team members is who is leading our interfaith. He is already chair of Faiths Together. So Mr. Thamkin, many people know him very well. So he's part of the team. So when it comes to the faith matters or interfaith harmony, so that is his kind of expertise in here. So now you can understand, because once we have the people which are part of the BCD are significantly like he has over 40 years work experience within the community. आप समझ रहे? So इस तरीके से क्या होता है कि we are already very well connected within the community, because the people who she all have gathered around as advisory board and as team members, तो वो सारे वो लोग हैं कि जो अपनी फील्ड में ऑलरेडी ग्रेट काम कर रहे हैं. तो ये जो BCDE है, ये उन्हीं के ख्यालात का एक ऐसा मॉडल बना है. जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे हम सब लोग once we get our heads together, तो हम कहते थे यार ये होना चाहिए. तो समीना से ठीक है, मैं इस पे लीड करती हूँ, you people give us a feedback, and then she put everything together. So this combined skill sets, and most of us have served on charities and as trustees on multiple charities. We have done fundraising, we've done bid writing, we've done outreach, we understand charities commissions, but there is a gap at the moment, and that is to reach out to the communities and respond to the needs that are there. We've got a lot of silo expertise in a particular area. The women and children are being missed, and as you can appreciate, we've got a growing population of youth and children, and then we have a lot of women who are coming from a vast amount of backgrounds, who are needing different support and different needs from there. As Shabana said, you know, we've got some educated ladies, some with no skill sets, some who need basic skill sets. So it varies. So we are a point where people can come to, we can assess, we can also signpost with the other relationships we've kept within the charities. We can bridge the gap between the council as well, because we have a very good understand how each council in the areas are working, so we can facilitate a lot of that as well. So obviously you are telling a lot in detail, and I'm very glad to have you both today in my program actually. But I would like to know like about different stages of help. Like if a person or if a lady is coming to you after separation or after divorce and she is not in a good state, how you help her out, and how you empower her to be on her own feet or financially stable or mentally stable. So how do you, where you start your help with? So, basically, in this particular example, when we have to look at the background of the person, that's very important. Basically, we handled one of the situations, the woman was from Pakistan, because when the people are migrants especially, they do not know what facilities are available in here, because they don't have an experience of that. Do you understand? So the first stop which we like to do in their situation is we try to tell them what help is available. You know, if there is domestic violence involved, so we refer them to the different sisters organizations which are doing it, because we are not a part of the council to provide them the advice, but we
the people with awareness, we give them the signposting, so we connect them with the right people where they can get the right support. Okay, because it's very important. Like we have to see their stage. If they are with children, or if they are, you know, there are different categories of amber, red, and this. So we have to because this is conversational, because we are very approachable. Because we are embedded within the community. So you categorize like different. Yes, so it all depends. It all depends what is the awareness level of that person. So basically there are people, and especially in such situation as you have mentioned, even somebody is very intelligent, so their intelligence is like a kind of you know, is smoked by the situation. So they can't see clearly what it is. So we demystify their situation. We say, okay, don't worry, relax, it's okay. Then when it comes to, there are shelters, there are food banks, there are systems which are there to support them, regardless of, obviously, their creed, age, and race, religion, whatever. So we live in a country which has great social system. So if somebody, so that's what I'm saying. But if somebody has already been through the process, then we suggest them if they need a legal advice. You understand? So our signposting is not limited to one aspect, because every person is unique, and every person has a unique story. And every every situation is different. So what we do is we try to kind of holistically understand their situation, and then we signpost them off. And it's not just that signpost them off, then we follow up with that, and once they have reached to the place where they're, so from our side is kind of completion of the task. One of the beautiful services we do have on board is something called family clinics, which is with another affiliated charity of ours, where they act as an intervention point. So if we have things like disqualified fathers who wish to partake in their children's upbringing, and they have not been allowed to, so they would facilitate those things. They would facilitate how to keep the family unit functioning, but still providing all the safeguarding and necessary resources for the children so they're not impacted too much. So I mean, we're quite keen to keep family units together if possible, and if not, to resolve things in a most amicable way, where the children are quite safeguarded as well, and they do that very well. Thank you so much, Samina, and I will continue with, you know, family network actually after the break, because here's a time for a short break, and see you after the short break. Stay tuned with us on IQRA TV.